Hello friends, this is Amit. Welcome back to my channel and I am back with another video in ServiceNow. ServiceNow में आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कॉल स्क्रिप्ट इंक्लूड यूजिंग बिजनेस रूल। किस तरीके से हम बिजनेस रूल से स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे ये मैं आपको प्रैक्टिकली आज बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे सर्वर साइड से एक सर्वर साइड के कोड को कॉल कर सकते हैं। इस केस में हम कैसे हम आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट इंक्लूड को कैसे हम कॉल करेंगे बिजनेस रूल से। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं आज हम एक टास्क करेंगे। तो शो द टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट क्रिएटेड बाय लॉग्ड इन यूजर। सो जितने भी इंसिडेंट क्रिएट किए हैं, जैसे कि जब कोई बंदा फॉर्म ओपन करता है तो वो हमें शो करेगा कि कितने इंसिडेंट इस पर्सन ने क्रिएट किए हैं जो भी उस फॉर्म को ओपन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेवलपर इंस्टेंस पे मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ जाएंगे, हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट इंक्लूड लिखेंगे। ओके, तो स्क्रिप्ट पहले जो भी एक्टिव है फ्रेंड्स मैं उसको हटा देता हूँ। बिजनेस रूल इसको हमने हटा दिया है। सेव। इससे रिलेटेड अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसको भी हटा देते हैं हम। तो हम जाएंगे स्क्रिप्ट इंक्लूड पर। ओके, अपडेटेड टेस्ट को हम एक्टिव फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स। ओके, हम सबसे पहले एक नई स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, let's get the number is get incident CIDNT count count. So मैं इसको क्लाइंट कॉलेबल नहीं कर रहा हूँ, इट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड चलेगी। तो हम इसमें एक सर्वर साइड बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ अपना फंक्शन। my function name should be get total number of incident. It's total number of incident. Get total number of incident, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया फ्रेंड्स। ओके, function फंक्शन, इसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो वेरिएबल count equals to no gr equals to collide record। सो हमारा ये चलेगा इंसिडेंट पर, INCIDNT इंसिडेंट। ओके, gr dot add active query gr dot। ओके, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड क्वेरी एक्टिव क्वेरी करें क्या, ऐड एक्टिव क्वेरी। ओके, सो gr dot add क्वेरी, हम यहाँ पर क्या क्वेरी करेंगे, हमारा जो
created by. So we have to write the back name of field created underscore by gs dot get user id. Okay, in that case I have to write get gs dot get user id. Okay, सो यहाँ पर यूजर आईडी दे दिया है gr डॉट क्वेरी। क्वेरी के बाद हम क्या करेंगे, gs dot add. So what I'm gonna do here, variable count equals to gr dot get row count. Okay, gs dot add info message. You have total number of incidents created by you. So it's by you. Then we will give a space here. Okay, plus we will write the count. It's count. Okay, this is the script I am writing here. So I need to go to the business rule now. Okay, don't change it. Access rules. So I am going to the business rule. यहाँ पर हम एक न्यू बिजनेस रूल लिखेंगे। display incident count, so it will run on incident. So just go to the advanced. Okay, it should be display type, display business rule. I am writing my display business rule का यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा यहाँ पर न्यू स्पेस script का name. So what is the script name we have written over here is, okay, we need to reload it. I think I have, so this is the script name. I will just go to here, write the script name dot, I will write the function name that I have defined here. So the function name is this. Okay, let's save it and let's check what happened next. So I am just going to open a new, not new one, earlier one. So it's not showing right now.
Okay, in that case we have to check for the things. हमने क्या गलती की है उसके बारे में चेक करेंगे एक बार फ्रेंड्स. In the script we will remove this and let's check that again. Info message this, and it will show the count. Save again. Try to reload it again. Okay. GS.info. In that case, whether it is working or not, how we have to check for the things, friends. Let me test this. Okay, so we will test this on background script whether it is working fine or not. So I'm just checking it. Let's try to run it. Okay, invalid query detected. So what is invalid? Incident gr.add query, gr.query variable count equals to gr.get row count. So gs dot, okay, add info message does not work here. We have to write here print. Okay, let's check out. Yes, it is working fine. So what I'm going to do, I have tried to add the active query also. So it is working fine. Then why it is not showing here? Let's try to check that. Key in display business tool when to run. So in that case we have to use the, yes, okay, I think I have to use the, let's check that out. SS business rule, SS rules. So let me check for the things first, friends. Okay, test script include. How is it working here? When to run new. I think I have missed something. No, I didn't. I think yes. Here are the things that have been missed by me. So let's test to try it again. दोबारा कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर अवेलेबल है. तो मैंने क्या करा था, मैंने एक सिली मिस्टेक की थी जो कि यहाँ पर हमने उसको करेक्ट कर दिया है. सो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं. मैं इस चीज को मिस कर रहा था फ्रेंड्स, ठीक है. तो आप इस तरीके से डिस्प्ले बिजनेस रूल में इसका यूज कर सकते हैं. आप बिफोर में भी यूज कर सकते हैं, आफ्टर में भी यूज कर सकते हैं. तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. मींस आप इस तरीके से बाय यूजिंग आप इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल कर सकते हैं फ्रॉम बिजनेस रूल. आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है. तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे फर्दर हम, ये अभी एक केवल एक टेस्टिंग डेमो था फॉर लर्निंग पर्पस ओनली.
प्रैक्टिकली हम इसको और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, और आगे बताने की कोशिश करूंगा मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसके बारे में लाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड। कोई भी क्वेरी होती, कमेंट होता है, तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी क्वेरी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।